Welcome this session 2 of 64 leading cases of AOR examination of Supreme Court. Now case number 17, R. Ramachandra Rao versus State of Karnataka, April 16, 2002. Right of speedy trial. So right of speedy trial, this is decided in this case, 7-judge bench. Constitution of India, Article 21, right to speedy trial, criminal proceedings, limitation bar provided by the judgment of smaller benches of the Supreme Court, held such bar contrary to law laid down by the larger bench in the Antulis case. Limitations bar not good law, since the same would amount to impermissible legislation and contrary to the law precedent. 2. Effectuate the right of speedy trial, power under the section 309, 311, 258 and 482 of the Code of Criminal Procedure and Article 226 and 227 of the Constitution would be exercised. Code of Criminal Procedure 1973, section 309, 311, 258 and 482. Doctrine of precedent. Pronouncement by smaller benches contrary to law laid down by the larger bench. Smaller bench is bound by a view expressed by larger bench. So suppose 2 जज का बेंच का कोई व्यूज है और उसके बाद 5 जज के बेंच का व्यू अगर आ गया तो ये इट इज ओवररूल्ड, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट. तो लार्जर बेंच का जो व्यू है वही कायम रहेगा, लोअर बेंच का जो स्मॉलर बेंच का व्यू नहीं रहेगा. तो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट. In appeal to this court, the question for consideration arose as to whether earlier decision of this court in Common Cause 1, Common Cause 2, Rajiv Dev Sharma 1, Rajiv Dev Sharma 2 cases would apply to the prosecution under the Prevention of Corruption Act 1988 and other economic offences. The case was therefore referred to the Constitution Bench. Case number 18, leading case number 18, PMA Pi Foundation and others versus State of Kerala and others, October 31, 2002. Administration of Educational Institution under Article 30, 11-judge bench. Constitution of India, Article 30, private institution, government regulations, applicability of and its extent, held in case of private unaided educational institution, government can put conditions pertaining to the academic and educational matters and welfare of the student and teachers only, but not in the matter of administration. Unaided educational institute में government administrative में कोई दखल नहीं लेगा, but they can put some conditions. This is the outcome of this case. Article 29(2) and 30, right of aided private minority institution to administration itself, government institution. Extension of applicability to be held right under Article 31 is not absolute, although right to administrator including right to grant admission to the student of its choice. But when such minority institution is grant aid, Article 29 would apply. 29 to apply. Minority institution को अपने हिसाब से अपने माइनॉरिटी चिल्ड्रन ही एडमिशन देने का अधिकार है,
लेकिन वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर गवर्नमेंट एडेड है तो फिर गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं that are applicable to them. So this is the unication case is also considered here. Doctrine of real de facto equality is also discussed here. This case will comes after this Stephens College and versus University of Delhi. इसमें कुछ केस डिस्कस नहीं हुआ था, कुछ मैटर, सो ये केस आ गया था TMA Foundation to discuss the balance point of this Stephens College case. And which points are considered in TMA PI conditions to view to the argument led by the parties in the petition, the following 5 main issues arose for consideration. Is there a fundamental right to set up educational institution, and if so, under which provision? Does Unnikrishnan's case require reconsideration? In case of private institution, can there be a government regulation, and if so, to what extent? In order to determine the existence of religious and linguistic minorities in relation to the Article 30, what is to be the unit, the state, or the country as a whole? To what extent can the right of aided private minority institutions to administer be regulated? These are points. I say सवाल आएंगे specifically which points are considered in TMA PI case by the bench. तो फिर वो मैथ है, वो SCR के हेड नोट देखो मत, किसी ने चैट बॉक्स में डाला था, whether it is math, yes मैथ है. अगर उसकी जरूरत नहीं तो फिर रजिस्ट्री क्यों दे रहे हैं आपको? जरूरत है दोस्तों उसकी, खाली कब उसको यूज करना है कब नहीं करना है, दैट इज इन योर हैंड्स. सो हेड नोट अगर थोड़ा नजर मार के रखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ते हैं, वो केस का आइडिया रहता है. टीम फाउंडेशन केस किसके ऊपर है, शरद सारडा केस किसके ऊपर है, ये थोड़ा थोड़ा. और ये हमारा जो एपिसोड है ना, ये एपिसोड आपके लिए वो काम आएगा. आप इसको काम करते समय, सुबह आपका एक्सरसाइज करते समय वगैरह भी सुन सकते हैं. बार बार सुन के आपके ईच एंड एवरी चीज यू विल गेट इट प्रॉपरली. सो केस 19 PA Inamdar versus State of Maharashtra 204. Administration and right of minority educational institutes. Constitution of India, Article 19, 1G and 6, 30, 1, 26A and 15(4). Right to establish and administer educational institutions. Autonomy of the private unaided minority and non-minority professional colleges. Petitions raising issues related to the fixations of admission quotas and the holding of the entrance examination, all issues which are related to the interpretation of TMA PI case in 2002, 8 SCC 481 and Islamic Academic case 2003 SCC 697, matter referred to a larger bench interim orders given for the academic year 2004-5 in respect of the fixation of admission quota and entrance examination. Now, case number 20. Technip SA versus SMS Holding Private Limited and others, May 11, 2005. A SEBI का केस है. SEBI, foreign law on Indian law for acquisition of Indian company by foreign company. इसके ऊपर केस है. Once again, listen. SEBI, foreign law or Indian law for acquisition of Indian company by foreign company. सेबी के ऊपर मेरा सेपरेट एक नानी पालकी वाला शो है, जरूर देख लेना. सेबी का बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा. ये हायर कॉर्पोरेट लॉ में आता है, एपेक्स कॉर्पोरेट लॉ.
में आता है, ये सेबी हो गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड सेबी, एक्ट 1992, Securities Exchange Board of India Substantial Acquisition of Shares and Takeover Regulations 1997, Regulations 10, 11 and 12, Acquisition of Indian Company, subsidiary of French company by another French company, Indian law, French law applicability, relationship held by the Supreme Court, relationship of two French companies, whether one of the control or not is really a question of their status. The applicable law would therefore be law of their domicile, namely French law. However, question as to their obligations under Indian law would have to be governed exclusively by Indian law. तो फ्रेंच कंपनी है, तो फ्रेंच लॉ के अनुसार वो एस्टैब्लिश हुई है, बट दैट इफ दैट कंपनी इज वर्किंग इन इंडिया, सो इंडियन लॉ दे हैव टू फॉलो। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ये भी इसमें डिस्कस किया है। फॉरेन लॉ व्हेन नॉट एप्लीकेबल, हेल्ड इनएप्लीकेबल व्हेन इट इज कॉन्ट्ररी टू डोमेस्टिक पब्लिक पॉलिसी एंड मॉरलिटी। दोस्तों, मैंने 2006 से लेके 2022 तक इतने साल मैंने इंटरनेशनल वर्कशॉप बहुत लिए, देश में विदेश में बहुत लिया, और वो वर्कशॉप 11-11 हजार फी रहता था मेरे वर्कशॉप को। लेकिन मैंने दिवाली के बाद जब मेरा 58 कंप्लीट हो गया, फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी एक एटम बंद कर देंगे। फिर मैंने वर्कशॉप बंद कर दिए, और वो जो 11-11 हजार के वर्कशॉप थे वो मैंने रिकॉर्ड करके रखे थे पहले, फिर वो यूट्यूब पे डाल दिए। नाउ दैट इज ओपनली अवेलेबल, राष्ट्र को समर्पित कर दिए, ओपनली अवेलेबल। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फॉरेन ट्रेड, आप लीगल मैटर में भी फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, इसमें उसमें कुछ इंटरेस्ट आपको है या कोई किसी को इंटरेस्ट है, तो यू कैन रिकमेंड दैट, एंड दैट वर्कशॉप इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज इट इज। 11,000 देने की जरूरत नहीं, उसको कोई मैंने टिकट लगाया नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो क्या, और बहुत सारे वीडियो मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्स के ऊपर है, वुमन पावर के ऊपर है, वुमन एक्सपोर्ट में क्या कर सकती है, चार्टर अकाउंटेंट क्या कर सकता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या कर सकता है, लॉ स्टूडेंट क्या कर सकता है, बिजनेसमैन क्या कर सकता है, बहुत सारा काम। जितने मेरे लॉ की वीडियो है उतने ही मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वीडियो है। बट आई क्लोज दैट वेंचर फ्रॉम दिस 20 नवंबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि 59 अभी शुरू हो गया है। अभी जितने भी बचे हुए मेरे साल है, 65 तक काम करता हूं या 70 तक, तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे ईच एंड एवरी लॉ का वीडियो कवर करने की कोशिश करना है। मैं तो पहले ही बताऊं, मैं बुद्धिमान आदमी बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन गुरु की कृपा से कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करते रहता हूं, और आपके जैसे के लोगों के साथ है तो ये कोशिश करने में और भी मजा आएगा, ताकत लगेगी दोस्तों। नाउ so this is the private international law, foreign law when not applicable, held applicability when the contrary to the domestic public policy and morality. Now, case number 21, Messrs. SBP and Company versus Messrs. Patel Engineering Limited and others, October 26, 2005. सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन के ऊपर है। सेक्शन 11 के अंतर्गत जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं, इसमें हर जगह पे ये केस रेफरेंस दिया ही दिया जाता है। आर्बिट्रेशन सेक्शन 11(20) ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, 7 जज बेंच। Arbitration Act 1940, Section 8, 20 and 21, the Arbitration and Conciliation Act 1996, Section 2H, 2H, 7, 9, 11, 16 and 34 Code of Civil Procedure 1908. Functions performed by the Chief Justice of Supreme Court, Chief Justice of High Court under Section 11 of the 1996 Act, administrative or judicial, held judicial। बहुत बढ़िया।
justifying appointment of the arbitrator, arbitral tribunal, and is conferred on the judicial authority, Chief Justice, unless shown otherwise. Chief Justice exercise power to appoint. Chief Justice of High Court or Supreme Court. Chief Justice exercise power to appoint an arbitrator, constitute arbitral tribunal, interference by the tribunal. Held, tribunal cannot go behind the decision of the Chief Justice and rule on its own jurisdiction. Conferment of the power of Chief Justice to appoint an arbitrator, characteristics of order of the arbitral tribunal, challenge under article 226 227. आर्बिट्रेशन के ऊपर भी मेरा एक सेपरेट नानी पालिके वाला शो है, जरूर देखना. आर्बिट्रेशन दिमाग से क्लियर हो जाएगा. छोटे छोटा वीडियो भी मेरा आर्बिट्रेशन लॉ के ऊपर. आर्बिट्रेशन लॉ इज वेरी इजी लॉ, बिल्कुल टफ नहीं है. आर्बिट्रेशन इज नथिंग बट प्राइवेट कोर्ट. ये हमारे रेगुलर कोर्ट में जो तारीख पे तारीख चलता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेसमैन के लिए. इसलिए दो बिजनेसमैन जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नेशनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नेशनल आर्बिट्रेशन में आएगा, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आएगा. इतना सिंपल है. और वो कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉज डालते हैं कि व्हेन डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन अस, वी विल सॉल्व दिस डिस्प्यूट्स बाय दिस आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन के अनुसार फिर वो करते हैं तो वो 1 साल में ही क्लियर होता है. 6 months, 1 साल में ही वो मैटर क्लियर होता है. और वो अवार्ड, अभी यहाँ पे मेन ये है कि वो अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड जो है, जिसको हम जजमेंट, सिविल कोर्ट की, हमारे रेगुलर कोर्ट को जजमेंट बोलते हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट को वो अवार्ड बोलते हैं. वो आर्बिट्रल अवार्ड कैन इट चैलेंज अंडर आर्टिकल 226 एंड 227. रिट पिटिशन के अंडर चैलेंज हाईकोर्ट में कर सकते हैं क्या? हेल्ड नॉट परमिशन. इतना पावर हमारे कोर्ट ने भी आर्बिट्रेशन को दिया है. इसके आर्बिट्रेशन भी एक सेपरेट विंग है आपके प्रैक्टिस का. कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस को बहुत महत्व दिया. और सेम सीपीसी का प्रोसीजर वगैरह जैसा है, सिविल प्रोसीजर को वही प्रोसीजर वहां पे फॉलो होता है. दैट इज अ प्राइवेट कोर्ट, ऐसा, बाकी कुछ नहीं. जो मेनी पीपल यू नो ऑल दिस थिंग्स, खाली जिसको मालूम नहीं उसके लिए मैंने बताया. पावर ऑफ चीफ जस्टिस डिलीगेशन, हेल्ड नॉट परमिशन. जस्टिस भी अपना पावर डिलीगेट नहीं कर सकते. केस नंबर 22, Rameshwar Prasad and others versus Union of India and others, January 24, 2006. Proclamation of Precedent Rule under section 356. Constitution of India, Article 32, 226, 356, 74 and 163. Invoking the power under Article 356, issue of proclamation, subjective satisfaction of precedent, conditions precedent, scope of judicial review. Article 356 and 74, satisfaction of precedent under nature of duty of the Council of Ministers before recommending the issuance of proclamation. On fact, held governor has misled Union Council of Ministers. Article 356, nature and scope of power, held it is an emergency power but not an absolute power. Article 32, 226 and preamble, scope of interference. Article 356, 163, 174 2b, dissolution of state assembly, floor test necessary of. Article 356, 174 2b, 85 2b, Schedule 10, dissolution of newly elected assembly, grounds to be taken into consideration, hung assembly, releasement of parties, MLAs, unethical means, horse riding, recommendations of dissolution on the ground and scope of judicial review in such situations. जब भी अनड्यू कुछ होता है, प्रॉपर सिस्टम से होगा तो दैट इज द अथॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर. जुडिशरी विल नॉट इंटरफेयर.
But unfair means buying and selling of MLAs, buying and selling of MPs. And because of that, when governor is recommending unnecessarily to the president to proclamation of the president rule. So such type of decision can be reviewed, must be reviewed by the apex courts, by the high courts. High court have the power under Article 226 and 227. रिट पिटिशन की पावर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, बिकॉज लीगल राइट भी वो कवर करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कवर करता है. बट इन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 इज देयर, एंड आर्टिकल 32 में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कवर होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कवर होता है, लाइक दैट. सो judicial scope of judicial review in such situation when undue influence, undue ऐसा कुछ होता है, गलत तरीके से कुछ होता है, सीधे तरीके से हुए होगा तो दैट इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जुडिशियरी विल नॉट इंटरफेयर इन दैट. ये सब ये केस में डिस्कस किया हुआ है. मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया तो आपको मजा आया. मजा आने के लिए तो शो है ये. पॉइंट, विच पॉइंट आर इन दिस केस? The point that fell for determination by this court are: is it permissible to dissolve the Legislative Assembly under Article 174(2)(b) of the Constitution without its first meeting taking place? Whether the proclamation dated 23rd May 2005 dissolving the Assembly of Bihar is illegal and unconstitutional. If the answer to the aforesaid question is in affirmative, it is necessary to direct status quo ante as on 7th March 2005 or 4th March 2005. What is the scope of Article 161 granting immunity to the governor? After hearing elaborate argument by brief order dated 7th October 2005, notification and dated 23rd May 2005 was held to be unconstitutional, but having regard to the facts and circumstances of the case, relief directing status quo ante to restore and Legislative Assembly as it stood on 7th March 2005 was declined. These points are considered in this case. What interesting case. If you are interested in politics now, many lawyers are interested in politics. Many politicians are lawyers. So if you are interested in lawyer, so you should take the interest in such type of cases. Case number 23. L.R. Coliho dead by legal representatives versus State of Tamil Nadu, January 11, 2007. This case is on Article 368, 9th schedule, judicial review. Constitution of India, Article 368, read with Article 31B, Article 32, 9th schedule amendment of Constitution, inclusion of enactment in the 9th schedule, judicial review, held a law that abrogate or abrogates right guaranteed by Part 3, that is fundamental right, of the Constitution, and also violates the basic structure doctrine, whether by amendment of any article of Part 3 or by an insertion in 9th schedule. Such law will have to be invalidated in exercise of power of judicial review of the court. Constitutionalization, doctrine of separation of power, doctrine of basic structure, and judicial review. All is discussed here. Constitutionalization, Constitution and India, Constitution of India, doctrine of basic structure, held equality, rule of law, judicial review, separation of power, secularism, reasonable balance between fundamental rights and directive principles for part of the basic structure. Each of these concepts are intimately connected. Case number 24, common cause, a registered society.
not retired, registered society. Common cause registered society versus Union of India. Common cause के दो cases, I think 2 or 3 cases in this 64 cases, but different cases. Common cause registered society versus Union of India and others, April 11, 2008. Doctrine of separation of power. This specific case is on the doctrine of separation of power. Road traffic issue by NGO. Two-judge bench. Public interest litigation, petitioner seeking direction to authorities for taking various traffic safety measures to control occurrence of road accidents. Scope. Held. Fertile reaction to authorities as sought for by the petitioner amounts to legislative executive action, which only the legislature executive is competent to give. Judiciary cannot encroach into the domain of legislation and executive. The court must exercise judicial restraint and must not reform executive. So this is the doctrine of separation of power. So legislative functions कौन से हैं, judicial function कौन से, all are discussing in there. And so the doctrine of separation of powers are widely discussed in this case. Case number 25. We have to cover 32 cases. So 16 cases we have to cover in second part. Session 2. That is second part. State of West Bengal and others versus Committee for Protection of Demographic Rights, West Bengal and others, February 17, 2010. This case is also on doctrine of separation of power, basic structure doctrine, direction given by Supreme Court to CBI to investigate in the state without state's consent. इतने point ये cover में case में. Repeat, I'm repeating again. In state of West Bengal and others versus the Committee for Protection of Demographic Rights, West Bengal. This case considers doctrine of separation power, doctrine of basic structure, direction given by Supreme Court to CBI to investigate in state without state consent. Constitution of India, Article 32 and 226 and Article 21, Fundamental Rights. Fair and impartial investigation, judicial review. Direction by the Supreme Court, High Court to CBI to investigate a cognizable offense committed within the territorial jurisdiction of the state without the consent of the state government. Held, will neither impine upon the federal structure of the Constitution nor will it violate the doctrine of separation of power and shall be valid in law. State has a duty to enforce human right of the citizen, providing for fair and impartial investigation. For fair and impartial investigation के लिए Supreme Court has given direction to the CBI to enter in that state of West Bengal and investigate without their state consent also. Now, in this case, essential feature of the Constitution constituting its basic structure, no act of Parliament can exclude or curtail the power of constitutional courts with regard to the enforcement of fundamental right. जब फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट का बात आता है तब नो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट with regard, no parliament can exclude or curtail the power of the constitutional court with regard to the enforcement of fundamental right. Case number 26.
Srimati Selvi and others versus State of Karnataka, May 5, 2007. Macroanalysis, polygraph, and brain electrical activity. 3 judges bench. Section 161 to explanation to section 53. This section of Code of Criminal Procedure. 53, 53A and 54. Investigation, examination of accused person, suspects and witnesses, use of certain scientific techniques, whereas narcoanalysis, polygraphs examination, and brain electrical activation profile, that is called BEAP test. Involuntary administration held violative of Article 23 of the Constitution of India. This is violative of Article 20 sub clause 3 of the Constitution of India. However, any information or material that is subsequently discovered with the help of the voluntary administrator, voluntary करते हैं टेस्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, but compulsory नहीं कर सकते हैं ये टेस्ट. Test result can be admitted in the according with the section 27 of the Evidence Act. Guidelines formulated by the National Human Rights Commission to be strictly adhered to. Similar safeguard should be adopted for conducting such tests. Constitution of India, Article 23, Evidence Act 1872, Section 27, Criminal Investigation, Video Recording and Narco Analysis Interviews. Leakage to media by the investigation agency. All these facts are discussed. Held. No person should be forcibly subjected to any of the aforesaid techniques, whether in the context of investigation in criminal cases or otherwise. Doing so would amount to unwarranted intrusion into a personal liberty. So this is clear-cut instruction from the Apex Code. Now, case number 27. Reference, special reference number 1 of 2012 under Article 143(1) of the Constitution of India. Reference under Article 143(1) for 2G after 2G case. 2G case decide होने के बाद 2G के लिए रेफरेंस आया था प्रेसिडेंट से सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर ये रेफरेंस केस. Article 143(1) power of president to consult Supreme Court. Scope of it. It is not necessary that the question on which the opinion of Supreme Court is sought must have actually arisen. The president can make a reference even at an anterior stage, namely at the stage when the president is satisfied that the question is likely to raise. The satisfaction whether question meets prerequisites of Article 143(1) is essentially a matter of precedent to decide. Upon receipt of the reference under Article 143(1), the only discretion Supreme Court has is either to answer the reference or respectfully decline to send a report to the president. Article 143(1) presidential references subsequent to the decision of Supreme Court in 2G case maintainability. Held. The reference is maintainable notwithstanding its effect on the ratio of 2G case as long as the decision in that case qua tis inter party is left unaffected. So what is the meaning of that? कि 2G केस का
डिसीजन हो गया है ओपन कोर्ट में, वो रिपोर्टेड केस है, लेकिन उसके ऊपर प्रेसिडेंट ने कुछ रेफरेंस मांगा है। अभी ये प्रेसिडेंट को रेफरेंस देना या ना देना है, दोनों का डिस्क्रिप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो अगर रेफरेंस देती है आफ्टर डिसाइडिंग द केस, और वो रेफरेंस अगर थोड़ा अलग भी आता है, तो ओरिजिनल डिसाइडेड केस विल बी इफेक्टिव। ये रेफरेंस खाली प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ही है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट मैटर, प्रेसिडेंट में आस्क द रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। घर में भगवत गीता रखते हैं, कुरान रखते हैं, बाइबल रखते हैं, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के हर घर में चाहिए। और बीच में वो कुछ एटलीस्ट फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, स्टेट ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए बीच में। तो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए वो जरूरी है दोस्तों। 9, नाउ लीडिंग केस नंबर 28, Republic of Italy and others versus Union of India and others, January 18, 2013। इसके ऊपर एक केस है, jurisdiction of trying case in India और Italy। एक केस इंडिया में ट्राई करना या इटली में ट्राई करना, ऐसा केस है। सो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर है केस, बहुत अच्छा है। इंसिडेंस ऑफ फायर at a distance of about 20.5 nautical miles from the Indian sea coast of the state of Kerala. Firing by officers of naval staff of Italy deployed on a mercantile ship of Italy. केरला के कोस्ट से तो 2.5 नॉटिकल माइल्स के ऊपर, 6 नॉटिकल माइल्स तक भारत का हद रहता है, उसके आगे अननोन सी है। तो वहां पे इटली का रजिस्टर्ड शिप है, वहां पे फायर हो गया और वहां पे इंडियन लोग काम करते थे, ऐसा लफड़ा हो। सॉरी, हमें बॉम्बे का इसलिए थोड़ा सा बॉम्बे स्टाइल आती है बोलने में। रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 2 पर्सन ऑन इंडियन फिशिंग वेसल, FIR registered, FIR against 2 officers under section 302-34 IPC lodged in the state of Kerala. State police investigate the matter and they arrested the accused. Writ petition under Article 226 of the Constitution by accused challenging the jurisdiction of state of Kerala in registering FIR, in investigating the matter and arresting the accused. Held by Supreme Court further, action by state of Kerala was without jurisdiction because the incident took place within the contingent zone on which the state did not have jurisdiction. Also, because in the case 2 sovereign countries were involved and one country had already initiated criminal proceeding against the accused, state of Kerala as one of the unit of the federal unit would not have authority to try the accused. Direction to Union of India. Supreme Court ने Union of India को direction दिया है. Direction to Union of India to set up a special court to try the case accused can be invoke provisions of Article 100 of UNCLOs, whereupon the question of jurisdiction to investigate into the incident for the courts in India to try the accused would be considered. ये जो आर्टिकल 100 है, ये यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन है UNCLOs उसके अनुसार है। तो UNCLO का भी डिटेल डिस्कशन इसमें किया है ये केस में। तो जब उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो ये केस निकाल के फटाफट लिख सकते हैं आप, रिपब्लिक ऑफ इटली एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। केस नंबर 29, नोवर्टीज AG versus Union of India and others, April 01, 2013। इसके ऊपर एक केस है पेटेंट एक्ट
1970, section 21J, 21JA, 3D, 2 जज बेंच का है, बहुत अच्छा केस है, पेटेंट लॉ के ऊपर है, कॉर्पोरेट लॉ में आता है। सेक्शन 21J, 21JA and 3D, grant of patent to Elmatinib mistlet in Bela crystalline form, twin test of invention, ये कंपनी का नाम है, मैंने पहले लिया हो, twin test of invention and patentability held the patent product fails in both the test of invention and patentability. It is known substance of Jimaram patent. It is not a new product. Not only the Lindsay milestone meslet known as the substance of the Zimrin, but its pharmacological properties are known in the Zimrin patent. It does not qualify the test of invention as laid down in section 21J, 21JA. तो invention जो है, patent कब मिलता है? When invention is there. Copyright and patent, these are the like a similar for layman. Copyright is the print, books का copyright, इसका copyright ये है, but invention के ऊपर patent मिलता. Invention means which is not into existence earlier. You have created a new thing. So that is given in the definition of section 2J, invention. Imatinib meslet is known substance with the known efficiency. Thus, beta crystalline form of imatinib meslet is a new form of known substance. Invention held. In order to qualify an invention, a product must satisfy the test. That is, it must be new, it must be capable of being made or used in the industry, and it must come into being a result of an invention which has a feature that entail technical advance over existing knowledge or has economic significance and makes the invention not obvious to the person skilled in article section in art section 2.1. Invention chemical pharmaceuticals held a new product in chemical and specifically pharmaceutical may not be necessarily mean something altogether new or completely unfamiliar or not existence before. Test of efficiency also discussed there. ये केस पढ़ लेंगे ना तो पेटेंट लॉ पूरा समझ में आ जाएगा. How much variety is there in 64 leading cases? When you are learning these cases for the sake of examination, this is burdenable. But for the sake of knowledge, जब आप ये cases पढ़ेंगे तो it is enjoyable. So मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आफ्टर योर एग्जामिनेशन आल्सो डेली एक केस थोड़ा सा और एनालिसिस करके पढ़ो. एक किताब से पढ़ो या ओरिजिनल केस पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो. केस नंबर 30, डॉक्टर बलराम प्रसाद वर्सेस डॉक्टर कुणाल साहा. ऑर्डर्स अक्टूबर 24, 2013. कंज्यूमर Protection Act 1986. Negligence of doctors. डॉक्टर के नेग्लिजेंस के कारण जो कॉम्पेंसेशन देना पड़ा, ये उसके ऊपर है केस. इसलिए नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया तो ये केस ध्यान में ख्याल में आना चाहिए आपका. डॉक्टर बलराम प्रसाद वर्सेस कुणाल साहा. कंप्लेंट मेडिकल नेग्लिजेंस. Consumer Protection Act 1986, complaint medical negligence.
contributory negligence, death of an US-based patient in hospital in India, National Commission holding the hospital and doctor liable for medical negligence, as also husband of the deceased liable for negligence, contributory negligence, and as such deducting 10% towards the contributory negligence from the compensation. Awarding rupees 1,55,58,750 to claimants. Held by Supreme Court, appellant hospital is vicariously liable for its doctor and is therefore directed to pay total amount of compensation amounting to rupees 6 crore 8 lakh 5,501 under various heads as detailed in judgment. After deducting rupees 25 lakh payable by appellant doctors, National Commission erred in holding that claimant had contributed to the negligence and appellant doctors and hospital, which resulted in death of the wife of his wife. And when the Supreme Court had clearly absolved the claimant of such liability and remanded the matter back to the National Commission only for the determining the quantum of the compensation. Finding of the National Commission is in this regard is set aside, and it is re-emphasized that the claimant did not contribute to negligence of appellant doctors and hospital, which resulted in death of his wife. Consumer Protection Rule 1987. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर मेरा एक वीडियो है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, जो ये इसका फोरम है हमारा, इसके ऊपर हम एक नानी पालिका वाला शो अलग लेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी गुड कॉर्पोरेट लॉ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंपटीशन एक्ट ये वो भी काफी मजेदार है केसेस, को जरूर लेंगे। नानी पालिका वाला के साथ जुड़ते रहिए, हमारा ऑफिशियल ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे मिलेगा। अभी मैं सैटरडे का सेशन में सब इसमें नहीं डालने वाला हूँ। सैटरडे को सेशन में ये रिमेनिंग 32 का लूंगा ना, वो खाली इस पे डालूंगा, जो ऑफिशियल ग्रुप है नानी पालिका वाला, वहां ही डालूंगा, क्योंकि मुझे खाली अभी वो 32 केसेस कंप्लीट करके वीडियो डालना, इतना ही मेरा पर्पज, इसलिए मैं बहुत सारे ग्रुप पे नहीं डालूंगा। आप डालेंगे तो आप डाल सकते हैं, मेरा मैसेज वहां पे आने के बाद यू कैन पुट दैट मैसेज एंड सेंड टू डिफरेंट AOR ग्रुप, लाइक यू कैन पुट इट, बट आई विल पुट ओनली ऑन योर ग्रुप। सैटरडे का जो हमारा लॉगिन ID पासवर्ड रहेगा, टाइमिंग हम सैटरडे का एक काम करते हैं, वी विल कीप अर्लियर टाइमिंग लिटिल बिट, 6 o'clock रखते हैं, 6 to 8:30 तक चलेगा, क्योंकि आप देखा ना कि मैंने 9:30 तक टाइम दिया था, बट 9:30 क्रॉस हो गया। और आगे के केसेस बहुत है, आधार केसेस है, ये केसेस है, ट्रांसजेंडर केस है, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस। सो वी शुड हैव एटलीस्ट 3 hours. So on Saturday we'll start at 6 and we'll end around 9:15 like that. वो भी 2 सेशन में हम लेंगे। ओके, केस नंबर 31, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, November 12, 2013. Registration of FIR under section 154 of Criminal Procedure Code. बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद FIR रजिस्टर कब करना, कब नहीं करना, इसका काफी गाइडेंस प्रॉपरली दिया है। और स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ के केस में डायरेक्ट केस FIR रजिस्टर नहीं करना, पहले इन्वेस्टिगेट करो, सही में कॉग्निजेबल ऑफेंस है क्या, देखो, फिर FIR रजिस्टर करो। ऐसी गाइडेंस इसी केस के कारण दी है। सो दिस इज वेरी गुड। सो पढ़ते अभी क्या है, देखते हैं। सेक्शन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, section 154 FIR registration, whether mandatory or requires the police to conduct preliminary inquiry to test the veracity of such information
before registering it. Held. Supreme Court क्या बताना है? Held. The condition sine q non, essential condition for registering FIR is that must be informed and information discloses commission of the cognizable offense. The reasonableness or credibility of the information is not a condition precedent for the registration of FIR. The provision under section 154 is mandatory, and therefore it is mandatory for police after to register FIR on the basis of information disclosing cognizable offense. Registration of FIR is not in the contravention of Article 21 of the Constitution. ये भी clear कर दिया है कोर्ट ने. However, there may be instances where preliminary inquiry may be necessary before registration of FIR. For example, matrimonial dispute, commercial offenses, medical negligence cases, corruption cases, etc. However, such inquiry would be only to be ascertained as to whether the information revealed as a cognizable offense. Cognizable offense है या नहीं देख लो, करप्शन केसेस में है, नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस केस में है, नहीं तो कोई भी डॉक्टर के खिलाफ आ गया और एफआईआर कर दिया और एफआईआर हो गया ना, अरेस्ट कर ले तो गड़बड़ हो जाएगा. सो इन दिस फोर कैटेगरी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस and corruption cases, there should be a pre-investigation properly before registering FIR. ऐसा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया है दोस्तों. वेरी गुड केस. आप बोलेंगे सर आप हर केस को गुड केस बोलते हैं. गुड है इसलिए तो लीडिंग केस में भाई, इसलिए तो गुड बोलना ही पड़ेगा. केस नंबर 32, टुडे सेशंस लास्ट केस. National Legal Service Authority versus Union of India and others, April 15, 2014. Article 14, transgenders equal treatment. जो मेल भी नहीं और फीमेल भी नहीं, ऐसे लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता था, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ा जजमेंट है. इसलिए याद रखना, ये जजमेंट का कॉस्ट टाइटल क्या है? National Legal Services Authority versus Union of India and others. This is depend upon Article 14. Transgenders equal treatment. Two judge bench का ही decision है, but very powerful decision. Article 14, transgenders claim for equal treatment. Held. Article 14 states that the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. Article 14 does not restrict the word person and its application only to a male or female. Hijras or transgenders person who are neither male nor female fall within the expression person, and hence entitled to legal protection of law in all sphere of the state activity, including employment, healthcare, education, as well as equal civil and citizenship right as enjoyed by any other Indian citizen. Criminal Tribes Act 1871, Penal Code 1860, Section 377. Article 14, claimed by transgenders, Hijras, launch for legal status as a third gender. Held. Transgenders belonging to a distinct socio-religious and cultural group and therefore have to be considered as a third gender, apart from the male and female. Gender's identity is integral to the dignity of an individual and is at the core and personal autonomy and self-determination. Hijras and therefore have to be considered as a third gender over the above binary genders. तो इस जजमेंट के बाद
तीन जेंडर अस्तित्व में आ गए. One is male, one is female, and third is not neither male nor female, like that. So this is very good judgment. Historical background also discussed in this matter. Yugakarta's principle, some biological test, psychological Yugakarta's principle, many things are discussing. Doctrine, principles, human rights, jurisprudence, very interesting case. International convention also is there. Implementation of the international convention required legislation. Article 253 states that Parliament has the power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement, or convention. So this is the 32nd important case. Remaining cases we will see in session 3 of these 64 leading cases of AOR examination. So all the best for attending this. Thank you. Thank you very much. Jai Hind. Thank you.